तो गाइस हमने पार्ट वन में जितना भी डिस्टेंस कवर किया था लगभग 725 किलोमीटर था। 3 आवर्स में 15-16 आवर्स में हमने उसको कवर किया था। और उसके बाद अब यहाँ पर जो अभी भी सेकेंड हाफ में जो हम अभी तय करेंगे इसके लिए निकल चुके हैं, वो लगभग सेम डिस्टेंस रहेगा 725-730। और इसको ट्राई करेंगे कि हम जल्द से जल्द कवर कर ले, क्योंकि आगे नॉर्थ जा रहे हैं तो जितना लेट करेंगे उतना हमें ठंडी मिलेगी, ऐसा है। और होपफुली टारगेट तो यही है कि 12 घंटे में ट्राई करें। अभी तो हमने जर्नी स्टार्ट की थी 7:30 को, जो कि थोड़ा लेट हुआ है, बट विल ट्राई टू कवर दैट द रिमेनिंग डिस्टेंस in 12 hours time. The expected will be somewhere around 7:30 in the evening, and yeah, we'll see how are we going to cover up. We'll try to increase the speed. और रोड काफ़ी अच्छी है तो इसमें हमें इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और जो टारगेटेड टाइम है उस पर हम पहुंच जाएं। सो लेट्स हिट इट गाइस। बने रहिए और एंजॉय करिए। थोड़ा सा मैं जानता हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो था थोड़ा लॉन्ग हो गया, वो तो और भी बड़ा था। वी ट्राई टू cut it down the unwanted cover up, so we did the best, and hopefully ये second part में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। enjoy the trip guys along with us। कल अच्छा खासा कवर कर लिया हमने। ये जो होटल है काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे कोई भी अगर जैसा मुंबई टू प्रयागराज और मुंबई टू आगरा आ रहा हो, जा रहा हो, तो ये होटल अच्छी है स्टे करने के लिए, और प्योर वेज है।
43 किलोमीटर दूर है शिवपुरी से। थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। अब यहाँ से चाय पी के निकलेंगे। हम यहाँ पर रुके थे थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। अब यहाँ से निकलेंगे। काफ़ी यूनिक है और ट्रेडिशनल है यहाँ पे।
रिमेनिंग डिस्टेंस थी हमने अप्रोक्सीमेटली वही 12 आवर्स में कवर किया है, और विच वाज गुड एंड वी मैनेज्ड ऑन टाइम, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ रही थी और रात में, और फॉग भी स्टार्ट हो गया था। फॉर्चुनेटली हम तब तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और ये भी वही लगभग जैसा मैंने कहा था कि 725 किलोमीटर हमने कवर किया 12 आवर्स में। तो इसमें ओवरऑल जो हमें पेट्रोल लगा, हमने 4 बार भराया, और लगभग 56 लीटर इसमें गया है ये जर्नी कवर करने में, विच वॉज नॉट बैड। ये बाइक का एवरेज ही 30 किलोमीटर पर लीटर, जो सिटी टू हाईवे तो ऑलमोस्ट उतना ही मिला है हमें, विच वॉज गुड। सो आई होप गाइस लाइक आपको पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट भी काफ़ी पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, सो दैट हम लोगों के पास जाए और और भी मेरे साथ जुड़ सकें। तो ऐसे ही मैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए, होपफुली अच्छा हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई नो लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस आर क्वाइट tiresome, but thanks for your patience, and फिर मिलेंगे दूसरी जर्नी में, shall be taking it shortly. Thank you so much once again. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।